सर आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। ओहो। और इस वीडियो का टाइटल है कि ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य जिसको आज आप जानेंगे और ये जो फैक्ट होने वाले ये दुनिया भर के होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। क्या सब ये जो ज्ञान जो है नी, इसका कोई पार नहीं। मान के चलो कि समुद्र की गहराई है, जितना डूबोगे जितना उतना ज्यादा ज्ञान आपको होता जाएगा, लेकिन वो कभी कम नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि ये हो तो वो सीख लूँ, ये हो तो वो सीख लूँ। इसका कोई किनारा ही नहीं है और कोई इसका तक भी नहीं। बाबू भाई, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करा हुआ हमने, आपने आपका ज्ञान खाली जाएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको प्राप्त तो होगा ही, कहीं ना कहीं काम तो आएगा आएगा जिंदगी में। ये चीज ऐसे अगर सही जो लेटर से प्राप्त की है तो उसका फल अपने को अच्छा मिलना ही या जरूर ये बात तो तुमने सुनी होगी कि इसी जरूर हासिल करने के लिए कोई लंदन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई सही कह रहा हूँ। लाखों रुपए खर्चा करते हैं, इतने खर्चे, और यहाँ बिना हिंग और बिना फिटकरी बिना किसी उसके अपने को फ्री में ज्ञान मिले तो अपने लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, इससे कोई बड़ी बात ही नहीं अपने लिए। फ्री में है वो चीज को बिल्कुल वो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एक एक चीज को कितनी भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, सारी चीजें समझ में आती है अपने को। यार खोल दो आज बांध पर देने को ज्ञान की धारा देखिए हम कृष्ण कहाँ तक डूबते हम भी लगाइए। Welcome to another one of my videos with random geography and culture facts. There is no real reason that any of these facts made it into the video, other than I came across it, thought it was interesting, and it just didn't make sense for me to make an entire video about it at this time. Anyway, let's go ahead and begin. In the landlocked African country of Eswatini, witches are banned from flying above 150 meters, or about 500 feet. Any witch caught flying their broomsticks above this limit faces arrest and a hefty fine equivalent to just over $30,000 US. There's no penalty for flying below 150 meters. अबे क्या ऐसा होता है क्या जो जुड़ने की क्या उड़न भरती है तो यार हमको डरा नहीं है इसलिए कुछ तो भी यार। हाँ यार हो सकता है उनकी मानने चाहो जैसे ये जो चीज है हकीकत से तो बहुत दूर है, कहीं तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आपकी मान्यता क्या है वो आप जानो। In 2009, Libyan leader Muammar Gaddafi submitted a proposal to the United Nations to abolish Switzerland and divide it up along linguistic lines, giving parts of the country to Germany, France, and Italy. But the motion was thrown out because it violated the United Nations Charter, which states that no member country can threaten the existence of another. It's suspected that Gaddafi was angry about his son Hannibal and his wife being arrested in Switzerland for allegedly beating their two servants at a hotel. अबे तू नाराज हो जाएगा तो पूरा देश को बर्बाद कर देगा। पागलपंती है कि क्या है कि नादानपन है ये? हाँ यार अब लोग ये बताओ आप उसको पूरा बैलेंस में मिले देगा, आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो आधा ये कर दो आधा कर दो, अबे तो क्या है यार ये। For a short time, there was a country called the United States of Central America. In 1896, the countries of El Salvador, Honduras, and Nicaragua came together to form the Greater Republic of Central America. It was renamed the United States of Central America when its constitution went into effect on the 1st of November, 1898. But the country was dissolved just 28 days later, when El Salvador experienced a military coup by this guy. Singapore's constitution requires the president to have at least 3 years of experience in a high-ranking government job, or 3 years as chairman of the board or CEO of a company worth at least $500 million or an important government company. वो तो पहली बार पता चला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अलावा यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल अमेरिका भी बन चुका है यार। देखो अबे 28 दिन में तख्ते पे पड़ेगा ट्रीटमेंट वगैरह फिर अलग भी होगा। देखो सिंगापुर की जो राष्ट्रपति है जो कि तो मांग रहा है, इतना अनुभव चाहिए इतना चाहिए तो क्या यार। India has the longest written national constitution in the world at about 145,000 words. Moldova has a mall called Moldova. There is a city park in Park City, Utah called the Park City City Park. अब जो देश का नाम है उसी के ऊपर उन्होंने चीजों के नाम रख दिए। दुनिया में मैंने तो ये सुना था कि जो संविधान अपने आप में बना सबसे अच्छा संविधान बना है, लेकिन मेरे को आज पता चला को इतना बड़ा इतने शब्दों का संविधान वो भी अपने बनाया, सबसे लंबा हो भी है। हाँ सबसे लंबा बना।
In 2021, Botswana had the highest GDP growth rate of any sub-Saharan country at 12.93%, but their growth slowed to an expected 4% this year. This is partially due to global inflation, and the worst part, how inflation has affected the average person, including their investments, which are plummeting, like the stock market, which is either going to flatline or lose 20%, depending on which major bank you ask. Historic times. But Masterworks has been helping over 650,000 people adapt through it all, paying out tens of millions in returns last year alone. अब ये तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती इन्होंने फेक डाला बीच में एडवर्टाइज बना दिया इसका. No wonder they've been featured in financial publications like Business Insider and Financial Times, and were recently awarded one of LinkedIn's top 50 startups. Because from Masterworks' office in downtown Manhattan, their team is revolutionizing art investing. Now, I was skeptical when they first approached me earlier this year, but Masterworks doesn't do NFTs or crypto. You're investing in real physical paintings from legends like Picasso and Banksy, and they're qualified with the SEC, which I've linked in the description. In fact, some of you may have seen a return from Masterworks. They've sold 8 paintings since we partnered in July, for a total of 11 sales to date. यार भैया ये सारी चीजें जो तुम बताया है यकीन मगर मेरे तो दिमाग को ऊपर ही मेरी ये पहले नहीं पड़ी. बाबू पेंटिंग के लिए मैं समझ में नहीं आया कि इतने पैसे लोग खर्चा कर रहे हैं. अपन तो फूटी कोड़ी खर्चा नहीं कर रहा पेंटिंग के लिए. क्या है यार अब तो कोई दे भी नहीं दिया यार. वो इतना खर्चा कर रहे हैं. And right now, my viewers can claim a complimentary Masterworks account just by signing up with my link below. There are no McDonald's in Iceland. But that wasn't always the case. The first McDonald's in Iceland was opened in 1993. But 16 years later, when the Great Recession hit, import prices to Iceland skyrocketed. And so the company closed all its restaurants in the country. Iceland hasn't had a McDonald's since 2009. The man who bought the last meal at an Iceland McDonald's never ate the burger. He wanted to see if it would ever decompose. That burger is now housed at the Sinatra House. यूँ वहाँ पे आयात क्यों कर रहे थे? वहीं पे इन्होंने प्रोडक्शन चालू क्यों नहीं करा? समझ में नहीं आया मेरे यार ये बात. A hostel in southern Iceland. Andorra has 5 McDonald's, and because of its low population of around 80,000 people, this means Andorra has more McDonald's per capita than any other country. In 2009, KFC sent a letter to the United Nations asking for membership under the name Grilled Nation, which represented 60 million people who had purchased its Kentucky grilled chicken. As what would have been the 193rd member country, the nation would have given free samples of grilled chicken across the street from the UN headquarters in order to promote Monday's in-store free piece of grilled chicken event. The Grilled Nation was not admitted. बाबू अब ऐसा है कि कंपनी वाले भी उनका प्रचार प्रसार के लिए नहीं किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं आज. बिल्कुल देखो अब आप देखिए ना अपने कल्चर का पूछ गए. हाँ यार. There is a KFC as well as a Pizza Hut with a view of the pyramids of Giza. अच्छा. The tiny island nation of Tuvalu consists of 9 islands, but Tuvalu means 8 standing together in Tuvaluan. This is because only 8 of the islands were populated pre-European contact. This map was likely created in the year 1500, and it's the earliest known representation of the New World, and the first depiction of the equator on a nautical chart. अब देखो बाबू भाई पृथ्वी का नक्शा ऐसा माना करते थे कि पृथ्वी ऐसी है. अब क्या है देख पहले लोग जो है घूमने थे तो पृथ्वी में जिस हाल में जैसे थे कि वैसे उन्होंने नक्शा बना दिया. ये The map is attributed to the Castilian navigator and cartographer Juan de la Casa. Greece and Turkey have what's being called earthquake diplomacy. After both countries were hit with successive earthquakes in the summer of 1999, the countries agreed to help each other in the case of an earthquake, no matter how bad the relations are. Hawaii is in the tropics, where the length of day and temperature is generally warm throughout the year, but at its highest elevations, an occasional blizzard can occur. बाबू भाई ऐसा है कि तुर्की और ग्रीस की राजनीति अच्छी लगी मेरे को. भले कितनी भी लड़ा हो पर वो मुसीबत के टाइम पे एक साथ खड़े हुए. ये देख के बहुत मजा आया देख के. The United States' largest state of Alaska is bigger than the next 3 largest states combined: Texas, California, and Montana.
An estimated 300 trillion invasive mussels blanket Lake Michigan, Sure. but it's down from its peak of 480 trillion nearly 20 years ago. The Puerto Rico Trench, located on the periphery of the Caribbean Sea, is the deepest in the Atlantic. The trench is 800 kilometers long and has a maximum depth of 8,376 meters, or 5.2 miles. 8,000 मीटर है बाबू, ये तो माउंट एवरेस्ट का बराबर हो गया, तो यार उससे भी ऊपर हो सकता है। This point is of course the single deepest point in the Atlantic Ocean. It's commonly referred to as the Milwaukee Deep. According to NASA, beneath the Puerto Rico Trench is a mass so dense that it's caused the location to be the biggest gravity anomaly on Earth, meaning that because of its location, there should be less gravity, but something is creating a greater pull. This has also been known to have a negative effect on the accuracy of navigational instruments. 48.5% of people on the island nation of Mauritius are Hindu, making it the only country in Africa where Hinduism is the most followed religion. अच्छा, ये भी मेरे को पता नहीं था बाबू, भी बताओ। मॉरिशस यार, नाम ही पहली बार सुना मैंने यार। In 2017, Saudi Arabia accidentally published a school textbook with the Star Wars character Yoda. वो बैठे हुए चाचा पास में उनके। ये तो सर जूते सही है मेरे भाई। Seen photoshopped next to the late King Faisal, as he signed the UN Charter in 1945. Saudi Arabia's education minister publicly apologized for the mistake. कितनी बड़ी बेवकूफी है यार, अब ऐसा कोई होता है क्या? इसमें नया का मतलब नहीं है। अब वो छपा होगा तो छापने वाले ने भी देखा, कंप्यूटर एडिट करने वाले ने भी देखा, सब सो रहे थे के साले, कर क्या रहे थे? ये तो समझ में नहीं आया मेरे यार कि क्या हुआ क्या है। कुछ तो भी। The Appalachian Mountains on the eastern side of the United States, the Ouachita Mountains in Arkansas and Oklahoma, and the Little Atlas Mountains of Morocco all used to be part of the same mountain range, the Central Pangean Mountains, on the supercontinent of Pangaea. This mountain range began forming around 340 million years ago, and had reached its greatest elevation at around 295 million years ago. At its greatest elevation, it was around the same height as today's Himalayas. Bangladesh is a flood-prone country due to being situated on the Ganges Delta. And the many distributaries flowing into the Bay of Bengal. Many chicken farmers have had enough and are changing to raising ducks because if their farms flood, the ducks will float. कमाल है भी यार, जो मुसीबत बन के आ रही बाबू ये बाढ़, कभी फायदा उठाना सोच लिया उन्होंने, क्या दिमाग लगाया यार। Between 15 and 13,000 years ago, there was a lake that existed periodically in what is today western Montana called Lake Missoula. The lake measured around 3,000 square miles and contained about 500 cubic miles of water. The lake was the result of an ice dam. The ice dam would occasionally break, sending water through the glacial Lake Columbia and causing catastrophic floods in what is today Washington, Idaho, and Oregon. It's believed that this occurred around 40 times. यार ये देखो ये काम जो है फिजरत का काम था, ये कोई फिजरत ने बांध बनाया, कुदरत की छोड़ी। अब क्या है कि ये तो अपनों को अपन रहने के लिए आ गए, तो गलती तो अपनी है नहीं, वो तो पहले से, और वो फिजरत की चीज है, उसको कोई बदल नहीं सकता। El Dorado is named on many 16th and 17th century maps, but often as the name Manoa. 2 million people, which was nearly 1/3 of the Russian population, died of starvation from 1601 to 1603 due to a volcanic eruption. The volcanic ash obscured the sun, destroying the crops. अरे यार, ज्वालामुखी बहुत बड़ी चीज है भैया यार। चलो ये मैंने कहा किसी जमाने का नहीं, ज्वालामुखी नहीं, इन्होंने बहुत बहुत जाने ली है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। बहुत खतरनाक होता है। भगवान का शुक्र है बाबू भाई, अपने इंडिया में एक भी नहीं है। ये इसके लिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। That volcano was located in Peru. The Danube passes through the most countries in the world, crossing 10 countries: Germany, Austria, Slovakia,
Hungary, Croatia, अच्छा। Serbia, Romania, और Bulgaria, देश Moldova, and Ukraine. ओह देखा जाए तो पूरा यूरोप जो वो कवर हो हाँ, गया बताओ आप यार। पूरा यूरोप हाँ China created its first national park in 1982. The park is best known for its 3,000 vertical pillars, standing hundreds of अच्छा। feet tall. One of these pillars, which Oh. stretches 3,544 feet into the air, was named the Oh. Southern Sky Column. आप But in 2010, the name was changed to Avatar Hallelujah Mountain, after the highest grossing film of all time, Avatar, used the pillar as inspiration for the floating Hallelujah Mountains of Pandora. यार बात में तो सही है वो आउटर फिल्म है ना उसमें ऐसे पार्ट दिखाई दे दिखा देखी ना देखी थी मैंने। सही बात है भैया अब बाबू भाई कुदरत के कलाकारों को सलाम है दिल से। कैसा लग रहा है कि इंसान ने तराश के बना पर वो कुदरती है। देखो बाकी इंसान ने कुदरती बनाया मतलब क्या कमाल है यार बाकी में यार The purpose of the name change was to bring more tourists into the national park. Ironically, the Chinese government actually banned Avatar, but not before it was in theaters for 2 weeks and had become the highest grossing film of all time in China. The national park is also वाह यार ये the भी कमाल world's है। longest glass bridge. अच्छा The largest alluvial fan in the world is located in China, specifically the Taklamakan Desert. The alluvial fan is 56.6 kilometers wide and 61.3 kilometers long, with parts of the fan actively flowing with water from the Mulka River. अच्छा Lake Nyas in Cameroon is considered the deadliest lake in the world. बाबू भाई देखा जाए तो चाइना में भी एक से एक अट्रैक्शन है यार। देखो आप अरे फिर कोई वो कमाल की चीजें यार। चाइना का बहुत बड़ा देश छोटा बड़ा देश नहीं इसको आपको कम से नहीं On August 21st, 1986, this lake literally exploded, sending a water over 300 feet into the air. But more deadly than the water was the gas it sent over the surrounding area. Over 1.2 cubic kilometers of CO2 was released in roughly 20 seconds. This massive wave sadly suffocated 1,746 people in just one night. The world's largest cave is located in Vietnam and was only discovered in 1991. Its name translates to Mountain River Cave. The cave's roof collapsed on one portion, allowing enough light to come in for a rainforest to form. And that's all for this video. Thank you to all my Patreon and YouTube members for supporting the channel, and thank you all for watching. बाबू भाई दुनिया में भी एक से एक गजब जगह है यार। ऐसी जगह है कि बस पूछो मत यार। इंसान के जितना जन्म है नहीं ज्यादा से ज्यादा 60 साल वो एक एक जगह नहीं देख सकता, यानी 600 साल चाहिए उसको एक एक जगह देखने के लिए पूरी दुनिया की। ऐसी ऐसी जगह बनी है कि बस देखते रह जाओ इंसान यार। यार मेरे भैया क्या है कि लोग कहते हैं नहीं कि हमने पूरी दुनिया घूमी उसी इनका नहीं दिल्ली आए वहाँ से उड़ गए, चीन गए बीजिंग से उड़ गए, सऊदी गए जहाज से उड़ गए, अमेरिका गए वाशिंगटन से उड़ गए। भाई वो एक जगह से उड़ने को तो उड़ गए, लेकिन एक एक चीज़ एक एक शहर एक एक गली तो जब 600 साल के ना नहीं 6000 साल में भैया वो चीज़ देखने में कम पड़ जाएंगे। क्या तो ये बाकी क्या अब अपने में देख लो बाबू भाई, इंडिया में हर 60 किलोमीटर बाद मिट्टी चेंज रहती है, पेड़ चेंज रहते हैं, वेशभूषा चेंज रहती है। अब पूरी दुनिया में हर 60 किलोमीटर के बाद किसी जगह बदलेंगे, सोचते रह जाओगे तो जब अपने भारत की अगर यही हाल है तो इतनी बड़ी दुनिया है यार, बहुत बड़ी यार। ये बात बिल्कुल पगला जाओगे चीजें देख के तुम। चलो भाई जमीन भर के खाली समुद्र को देख लो, 2-3% आदमी पता लगा समुद्र का, लेकिन समुद्र की कितनी बड़ी गहराई कितने बड़े उसकी तो किसी को जानकारी है भी नहीं। बाबू भाई आधे से ज्यादा देश तो इन्होंने बताया नहीं है, छोड़ ही दिए। अब वो उनको भी बताने जाएगा नहीं तो 24 घंटे की लेंथ भी इनकी वीडियो कम पड़ जाएगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल इतनी बड़ी दुनिया है। यानी उनने खाली एक 3-4 देशों की चीजें उन्होंने वहाँ की बातें कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है, उसी में इसको आधा घंटा लग गया इसको। अब पूरी दुनिया को अगर लेकर चलता है बाकी सही है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाता। बाकी में साहब ये बात को माननी पड़ेगी। देखिए मैं पहली बार जब ऐसी हमको जानकारी मिली जो अभी तक हमको मालूम नहीं थी, देखने में भी अच्छी लगी, समझने में भी मजा आया, और एक एक बात को हमने बड़ी बारीकी से सुना और समझा। इसी तरह
वो कि वीडियो दोबारा फिर आपके सेवा में लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।